In the previous lecture, we were solving this example. Uh, did you completed this example? So first write Lagrange equations. Try to solve these equations. If you take second and third ratio, so you got solution, one solution, and also you can take mm, first and third. So you got dx, no, first or last. So on integrating, you got, or you can write, you can write constant c or b, whatever you want. Okay, or you can write from second. Also, you can write from second. Uh, from this, b equals. Okay, so one parameter family is a equal to u e power minus y square and b equal to, so this is, sorry, two parameter family, and you can specify b as a function of a to write one parameter family, and hence, so in that way you can express the solution. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but I don't know what is the problem with this account. I'm not able to listen you, but in other class I have around S11. I can listen the students. Audio.
Okay, I'll check the setting after class. One more example, when you have, sometime you may have condition. For example, find the general solution of the Cauchy problem. So Cauchy problem is first order equation with one condition. And what is condition? So when t equals 0, you know the solution, which is minus x by 3 when x is negative, and 2x plus 3 when x is positive. Okay, so first write Lagrange Charpit equations. So dx by a, instead of y you have t here, and right hand side. So this is linear equation. So from first two ratio, you have x equal to at plus constant, and from last ratio du by 0, so this means u is constant, or you can take second and third. Okay, so du equals to 0, so u is constant. Okay, so or you can write first one as x minus at equals a. So by specifying b as a function of a, by writing b as a function of a, we get b u ही है, u equal to f x minus at, where f is any arbitrary function. Okay, so this is the general solution. Now you need to find solution which passes through given data. So for solution passes through given data ux0, which is minus x by 3 when x is negative. So in this equation, set t equals 0. When t equals to 0, you have u is minus x by 3. So t equal to 0, so fx t is 0. ठीक है जी, तो आपको यानी कि एफ एक्स क्या बन गया ये। अब आपने solution passes through given data means try to find the form of f, कि f क्या होगा वो आपने फाइंड करना है। तो f की प्रॉपर्टी क्या बनी, f में जो भी इनपुट दोगे x, तो आपको रिटर्न होगा माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, तो बट हमने फर्स्ट में क्या निकालना है, एफ एक्स माइनस ए टी। तो जो इनपुट होगा उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देगा और 3 से डिवाइड कर देगा। सो दिस इज माई एफ एक्स। सो फ्रॉम फर्स्ट, so for x negative we have from first uxt क्या है, एफ एक्स माइनस ए टी। अब एफ आपने निकाल लिया,
So 1 by 3, you can write 80 minus x if you want. Okay. So this is a solution for x negative. For x positive, you have ux0 equals 2x plus 3. फर्स्ट में फिट कर दो t को 0, ux plus 3 solution equals fx minus 80. fx ही बचेगा, t 0 है तो fx क्या बना, 2x plus 3. जो भी इनपुट दोगे 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 ऐड कर देगा. So therefore fx minus 80 will be, इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई, अब इनपुट x माइनस 80 है, उसमें 3 ऐड कर देगा. ओके. तो फर्स्ट में आप ये वैल्यू fx का फिट कर दो. So this is similar to find solution of initial value problems. Likewise, initial value problems, you specify the condition to find unique solution. Okay, so now write solution. Therefore, the solution is uxt equal to 2x minus 80 plus 3 for x positive. So in that way, you can solve the initial value problem for first order equations. So let us take one more example, and I expect that you will provide me solution of this example. So this is again Cauchy problem. Cauchy problem means initial value problem. Solution of Cauchy problem. Ux plus 2x ut equals 2xu. फर्स्ट कंडीशन है ux0 equals x0 for every x. Second, u0y equals y square for every y. Okay, open your copy pen, write the solution. Write Lagrange equations
Lagrange equations or Lagrange Charpit equations. So dx by 1, coefficient of first derivative, then dt, second variable is t, dt by 2x, coefficient of ut, equals right hand side, d independent, sorry, dependent variable, then right hand side 2xu. From first two ratio, you have dx equals to dt, and integration yields x square equals to t, x square equals to t plus constant a. And from second and third, dt by 2x equal to du by 2xu. So du by u equals dt. So on integration, you got u equal to b e power t. So what we have, so we have a equals to x square minus t, and b equals u e power minus t. Or you can specify one parameter family by specifying one constant as function of another constant. So from here you can proceed for two cases. So first one, ux0 equals x square. तो सॉल्यूशन में फर्स्ट में x को जीरो फिट कर दो, सॉरी x जीरो, t को जीरो, या अगर प्रिसाइसली लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो फर्स्ट को, u को लेफ्ट में रखो, e पावर t को राइट में ले जाओ, ठीक है, एक ही बात है। या लेफ्ट में t को जीरो फिट कर दो, e पावर माइनस टी वन बन जाएगा। So left hand side u x0, which is x square, and right hand side fx square. तो फंक्शन ऐसा है जिसमें जो इनपुट दोगे सेम मिलेगा ना, मतलब अब एफ वाई है तो वाई मतलब सिंबॉलिक है, जो इनपुट दिया एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो सेम यू आर गेटिंग इन रिटर्न। तो यू क्या बना आपका, ई पावर टी तो है ही यहाँ पे पहले, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी वाई नहीं टी है, एफ एक्स स्क्वायर माइनस टी, ई पावर टी मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस टी। In the similar manner, you can also do second part. In this, by adopting the same strategy. So
these were the cases of first order first order quasi-linear by using method of characteristics. And quasi-linear, of course, also involves semi-linear and linear. So next we consider first order non-linear PDs. So we will write first order non-linear PDs as x, y. You can write z or u, ux, uy equals 0. Or if you specify ux equal to p, uy equals q, then you can also write these equations in this form x, y, u, p, q. And first method that is quite, you can say, tricky. So we will, of course, find solutions of these equations. Also, we put one condition here. Since equation is of first order, so this will be non-zero. And at any fixed point, x0, y0, u0. So we have f x0, y0, u0, p, q at those points. So this is an implicit relation, okay, between derivative p and q. बाकी point to fix है. So this is an implicit relation. So you can apply, there is an implicit function theorem which says that you have a relation between two variables. दो में है p और q में. So this theorem says that you can solve for one variable. यानी कि दो वेरिएबल p और q में रिलेशन है, तो आप p को एज ए फंक्शन ऑफ q लिख सकते हो या q को एज ए फंक्शन ऑफ p लिख सकते हो. इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम. ठीक है. So we have at this point, तो उसकी एक कंडीशन है. सो इफ वी अज्यूम, जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं उसके सेंस में पार्शियल डेरिवेटिव, अगर एफ क्यू अगर ये नॉन जीरो हो, देन बाय implicit function theorem we can determine q as a function of p, as a function of p. So we have f x0, y0, u0, p, और q है फंक्शन ऑफ p. ओके.
And we have already solved these problems in quasi-linear cases. So before going details how to find solution, there is one tricky method that is known as separation of variable that we have studied earlier. Separation of variables. For some simple nonlinear PD, this method is applicable to find solution. So what you do in separation, we assume solution either in this form or depending on the situation, separating the variable in plus or in multiplication. For example, solve the equation. Of course, you can check this is nonlinear equation. Okay, ux square ना, तो अगर प्लस है तो प्लस वाला ज्यूम कर लो, अगर नेगेटिव है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ प्लस है, सो यू कैन अज्यूम u equals u1x plus u2x, where u1 u2 are functions of, sorry, where u1 is a function of only x, that is clear, and u2 is a function of only y variable. तो यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लो ux, तो फर्स्ट u1 डैश आ जाएगा ना फर्स्ट में, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, फिर फाइंड करो uy, तो ये क्या आ जाएगा u2 डैश सेकंड, इक्वेशन में फिट कर दो, तो आपको क्या मिला, u1 डैश स्क्वायर प्लस u2 डैश स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ हम इसको ये लिख सकते हैं u1 dash which is a function of x square equals to 1 minus u2 dash which is a function of only y इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सेपरेशन का मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का वो सिर्फ x का फंक्शन है, राइट हैंड साइड ओनली डिपेंड्स ऑन y, सो और दोनों इक्वल हैं। यही हम करते थे सेपरेशन वेरिएबल में, लेफ्ट हैंड साइड एक एक साइड सिर्फ एक वेरिएबल है, दूसरी साइड दूसरा है, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड कांस्टेंट है। ठीक है, separation of variable, if you remember from OD, this is again an OD। ये u1 डैश का मीनिंग क्या है, du by dx, राइट में u2 डैश का मीनिंग क्या है, du2 by dy। सो लेफ्ट हैंड साइड depends only on x, right hand side only on y, therefore both sides must be constants, therefore u1 dash square equal to 1 minus u2 dash square, कांस्टेंट को आप मान लो a स्क्वायर, तो फर्स्ट और लास्ट को लोगे तो u1 डैश आपको मिल जाएगा इक्वल्स a, सो u1 क्या आ जाएगा ऑन इंटीग्रेशन ax प्लस सम अनदर कांस्टेंट b1। सिमिलरली 1 minus u2 dash square equals a square, so u2 dash square equals to 1 minus a square, तो u2 डैश आ जाएगा
plus minus under root 1 minus a square on integration u2 plus some constant b2। ठीक है, तो सोल्यूशन u क्या बना अल्टीमेटली, u इक्वल टू u1 प्लस u2 फर्स्ट से b1 आएगा, सेकंड से b2 आएगा, इनको कंबाइन करके आप b भी लिख सकते हो। सो फाइनल सोल्यूशन हैज ओनली टू कांस्टेंट a एंड b। ठीक है, so you can apply separation of variable to find a solution। One more example which is for multiplication। So solve u equals to ux uy। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने क्या अज्यूम करना है, अज्यूम u इक्वल्स टू u1x u2y मल्टीप्लिकेशन में। बाकी सब कुछ सेम है, फाइंड ux विच इज u1 डैश u2 एज इट इज, फाइंड uy u1 as it is u2 dash from equation left hand side u1 u2, right hand side u1 dash u2 dash u1 u2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, u1 dash इक्वल्स टू 1 by u2 dash। सेम आर्गुमेंट, लेफ्ट हैंड साइड depends on only on x, right hand side only on y, so both sides are constant, you can take them a। so यहाँ से मिलेगा आपको u1 dash equals to a, and on integrating you got u1 equal to ax plus b। From second, u2 dash equal to 1 by a, so you got u2 equal to 1 by a y plus another constant, say b1 and b2। Therefore u equals to u1 u2, this is u1, this is u2। Simplify a bit, this is xy, you can write new constant if you want, x y, then a b2x plus b1 by ay plus b1 b2। so you can simplify it xy, a b2 को आप लिख दो a और इसको लिख दो b, और इनको मल्टीप्लाई करोगे a b2 b1 a, ये b1 b2 बन गया, यानी कि ये b1 b2 क्या बन जाएगा, a b। so final solution has two two arbitrary constants, capital A and capital B। in that way you can specify the solutions of non-linear equations। any query?
Okay, I'll stop here. So we will continue in next class. So only 9 people are here. Okay, so if you don't have any query, then we will continue in next class.